हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्रिय ज्ञानवर्धक और सोलफुल चैनल पर फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लाइक अदर डेज वी विल नो a new topic in today's classroom also. Friends, there are 4 topics, new topics of today's classroom, and we will know in detail all 4 topics. First of all, we will know the classification and types of advertising. Friends, we have been know that what are the advertising, what are the objective of advertising, what are the aspects of advertising, what is an ad copy, etc. Friends, today we will know first of all the classification and types of communication or advertising. Friends, there are many types and classifications are present in market, but friends, many times the client may be failure while he is opt the very high level advertising, because the market research and media research strategy failure, and his aim will be damaged or dilute. So we should know that what are the types and classifications of advertising in globalization era. Friend, there are 2 types of classification of advertising, and these are classified advertising and display ad. Friend, first of all, when the advertising words come into the word of journalism, then the expenses recovery economic tool was thinking by the thinkers, and the first name come in the mind, and that was the advertising. But friends, the thinkers said that the journalism is a social service, not a profession. But friends, we all know that in 5 rupees or 2 rupees, 24 pages material or 24 pages we can't buy in market. So how can recover these expenses? Then one option was chosen by thinkers, that the classified ad may be solution. But friends, the classified ad, as the name, that is the square ad size and the price set by the words using in advertising, so that the expenses recovery was not so much powerful, because these ads are like recruitments, like marriage bureau, like lost things, these types only. Now the second choice was display ad. Friends, that was the more effective and efficiency tool for regret and recovery of expenses of media. Friends, then the thinkers said that we can apply the display ad tool for the economy of media. And friends, that strategy was proved successfully. Friends, display ad, as the name shown, that all things regarding
respectively of the product, of the idea or service display in the advertising. And this type of advertising is very much displaying with color combination, with branding, with logos, with place where customer can find his or her product, etc. All things. Many times prices also in display ad. And friends, the rate decided of display ad by the situation of place in print media or number of columns ad in print media, jacket ad, first page ad, last page ad, half page ad, quarter page ad. These are the types of classified ads in print media. In electronic media, the prime time is more effective time period for and display. And other hand, if you go with online media or new media, then there will be many types of strategies, like the target group, like the target festival, like the target programs in country, like election, okay, like Diwali, Holi, Raksha Bandhan, and many more, and education fair, youth, old persons, women, child, etc. Friends, now we classified the types of advertising in two classifications of ad, and these are based on area coverage. Friends, one type of advertising is decided by covering the area by advertising. First of all, local advertising. Friends, if the product is based on only local consumer, that will be local advertising, and that may be state level, local level, district level, and whole state level, like 24 states. Then we can publish our ad in 20 states or 12 states according to the effective and readers of the newspaper. Second is regional newspaper. Region. In one region, which type of advertising is likely or like to be consumer or attract the consumers through the media. Third is national level. Friends, many brands go through the advertising, like brandings of vehicles or any types of cold drinks, every types of chocolates, every type of eating habits, etc. Next is international. Friends, there are many brands which have their international goodwill, so that types of ad will be international ad. Next is media, based on media. First of print media, then electronic media, then third is outdoor and others. In others, we can add new media, social media, traditional media, etc. Friends, these are the types of advertising based on media. Next is audience. These are consumer, normal consumer, public, which is the god of market. That is public. That is consumer. Who will use the product? That is consumer. Second is industrial. In view of industrial, which type of ad will be success in market, in competitor market, that will be a type of
industrial advertisement, trade advertising. Trade, friends, there are a very thick difference between industrial and trade advertising, because friends, industry is the part of trade. Friends, trade is a short form of industrial advertising, because the public of trade will be short form, short group than the industry. Next is professional advertising. Friends, professional advertising will be more attractive, more effective than other types of, because the displayed will show all things and all slogans, punchlines that can be attract or magnet the consumer. Next type is functions. Friends, many types of advertising, but main type is direct or indirect media. Friends, direct media is like print media, like electronic media, like new media, like social media. But in indirect media, the messages, the SMS, MMS, these are the, and friends, indirect messages in mass communication. When a leader calls a rally or conference, then that is the indirect advertising. Next is primary selection, or primary structure. Friends, primary structure, the advertising will be very effective. It is the primary stage of the advertising which will call consumers attraction and consumer needs. Next is product institutional. Friends, many times like book fair, like education fair, like career fair, these are the based on the product institutional product call the advertising companies for advertise their products. Next is stage, on which stage the product is going to the market. First of all, pioneering stage. Primary stage matlab, it means that it is the high level of stage, that the product is situated in market, but a different type of advertising he want to for his product, for their products. This is pioneering. And second is competitive stage. Friends, many times the producer or organization want to go for an very different type of advertising for competitive market, for success in competitive market, so that type will be competitive stage advertising. Friends, these are the main types of advertising. Now we will know about the other topic that is connected with advertising, and many times we by mistake think both are same, and that is brand strategy. Friends, we know about brand strategy. A brand strategy is the holistic approach behind how a brand builds identification, favorability with customers and potential customers. Friends, it means the branding of a product or service or idea is more important, because the product's branding will attract the customers, the consumers, because friends, the branding is equal to goodwill of product or service in market, and that will be prepared by advertising. So friends, advertising is a part of branding, not branding is a part of advertising. Now friends, we know the importance of branding or brand strategy for a company. Friends, without effective branding strategy can become, the product can be
dilutes, weak or favorable without a unconscious product experience. Friends, if the successful branding will be not with a company or with a product, the product strategy, the product effect will be dilute, will be weak or will be neglected by customers. So there are many reasons for that the branding is most important for a company or a product maker. These are: improve the loyalty. Friends, we know that the brand in market, but how it can be make its loyalty or goodwill in market, then the branding is very important, because the market is competitor. Today market is competitor. The era of 1980s is not today, because competitors are many in markets. So make his existence in market, so that the branding is more important. Second is drive brand awareness and builds recognition, brand recognition. Friends, the brand in market, the brand in houses, but how it will be make its image with customers, or image in customers on their tongue, on their heart, on their mind, and that will be because of brand strategy. Next is builds repeat business. Friends, if the branding is successfully, then the business will be repeated many things, many old products also. That is the main power of strategy. Attracts target customers. Friends, branding is the tools that can be attract the view and attraction point of customers and make them so much interested to buy that product, offline or online. Next is keeps a team realizing with the same North Star. Friends, branding strategy have such a team that is like a North Star. North Star means Dhruva Tara. Friends, such a brand strategy or team of brand strategy that will be prove its success in market. How it is proved, how it is very important to branding the company or product. Next is ensures brand consistency. Friends, regular branding of a product will be prove that the brand is not short-term brand, it is long-term brand, and its consistency in market is long life time period. Next is provide guidance for hiring and training. Friends, branding is the tool or the strategy which can attract the experienced persons for the company, for the trained person, for the trainings also. Friends, these are the reasons for which the brand strategy is important in the market. Now, the main elements of brand strategies. First of all, brand purpose. What is the purpose of branding? Friends, there are many purposes, like brand should be go through in rural area, urban area, with students, with young age, with women, with children, with men, these types of. Second is market analysis and target audience. Friends, if you don't know who is your target audience, the branding is failure at every step. Friend, first of all, you should know your target audience. For that, you are going to bring your product in market, so that
branding should know the target audience so that the strategy can be prove itself. Next is brand consistency, and next is flexibility. Friends, the branding should be flexibility, not solid. If the branding will be flexibility, then the effect of this flexibility will be shown, the effect on consumer, on market and product also. Friends, these are the main two topics of today's classroom. But third topic is the ethics in advertising. Friends, we know that advertising is very effective things in today's globalization era. But do you know that there are many ethics for advertising? Friends, every type of advertising can't be delivered, published or telecast on the media. Then what is the ethics? First of all, we know what are the ethics in advertising. First of all, ethics in advertising refer to the moral principles and standards that govern the conduct of advertisers and their communication with consumer. Friends, there are many institutions that govern the policies, guidelines and activities of advertising agencies. Without that, friends, the consumer will be not find the right of living. So friends, it involves ensuring that advertising messages are truthful, respectful, fair, responsible, with a forms of protecting consumer standards, truths, interests and promoting social well-being. Friends, these points should be in ethics of advertising: truthfulness, interests, ethics, respect of our neighboring country, or the respect towards the consumer, the society, etc. But there are many ethics. These are, first of all, transparency and honesty in advertising. Friends, all things should be transparency in advertising, and there should be everything in honesty way. Friends, nothing should be hidden in advertising. Friends, many times the truth is so much far that we can't believe that the effect of product will be done or not. So there should be a honesty, there should be a transparency, so that we can see the effect or future of this product. Second is, avoid stereotype or offensive content. Friends, the advertiser should know that there are many words or sentences like stereotypes that can be ruin the advertising effectiveness, and that can make weak to the brand strategy. So this should be keep in mind by advertisers, that the consumer is not a foolish person. This is public and is know everything. Third is respecting consumer privacy. Friends, we have a right of privacy in Constitution. Every person has privacy right in Constitution. Every person have right to speech through Constitution. So advertising or advertisers should know that right should be safe in every way. Next is social responsibility and advertising. Friends, there are many social responsibilities of advertising or advertisers.
Friends, when the advertisement is publishing in the newspaper or telecast on the other media, then there is a responsibility word comes with this advertising, that what is the society, what is the part of society, and advertising should think that he is a part of society, so he should not go far from the social values, moral values. And next is balancing credibility and truthfulness. Friends, branding of a product is based on an advertiser. An advertiser's liability is to present a product with truth, with credibility and responsibility in market, that the advertiser will not drag the company in the court. That is the main responsibility or ethics for advertisers. Next is the role of regulatory bodies. Friends, if advertiser do not go with ethics, then regulatory bodies should keep in mind that they have power to stop that type of advertisers for advertising. Next is the impacts of unethical advertising. Friends, many times the unethical advertising has been done in newspapers, and these products have been locked for whole life, and the goodwill of that product has been damaged, fully damaged from the market. So that the ethics of advertising should be keep in mind by the advertisers and by the client also. Now we know the main ad agencies in India, ad agencies which provide the services of all types of services, like copywriting, like client making, like brand making, brand strategy, etc. And the top 10 ad agencies according to index of 2024 are, first of all, DDB Mudra Communication. Friends, first of all, the Mudra Communication is the first most important advertising agency in India from last 5 decades. That is number 1 agency. Second is Grey India, Trikaya Grey. Its old name is Trikaya Grey, and now it has been Grey India. Next is Ready Fusion agency. Next is McCain Erickson India Limited, right? Next is Ogilvy and Mather. Next is JWT India. Next is Travers Advertising. Next is FCB Ulka Advertising Limited. Chetra Leo Burnett Private Limited is at 9th place, and the Dentus Aegis is placed on 10th number. Friends, these agencies work for their clients, their advertisers. Friends, now we will know these all things in Hindi also. Friends, आज की जो टॉपिक हैं, आज की जो विषय हैं, वो 4 विषय हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये है विज्ञापन के प्रकार कौन कौन से। तो दोस्तों, संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा, विज्ञापन के मेन मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, वह है क्लासिफाइड और एक है डिस्प्ले एड। सजावटी और क्लासिफाइड एड, वर्गीकृत विज्ञापन जिसको बोलते हैं। दोस्तों, शादी के लिए वर चाहिए, वधू चाहिए, खोया पाया, या रिक्रूटमेंट, भर्ती, है ना, तो इस टाइप के जो एड होंगे ना, वो क्या होंगे, वर्गीकृत विज्ञापन होंगे दोस्तों। लेकिन इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं हो सकती मीडिया की, तो उन्होंने क्या किया, डिस्प्ले एड को अपनाना शुरू किया। डिस्प्ले एड में सजावटी विज्ञापन, जैसा कि नाम से जाना जाता है, सजावटी विज्ञापन में कंपनी का लोगो, कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज
बेहतरीन तरीके से कलरफुल दिखाया जाएगा, रंगीन विन्यास किया जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो कैसे तय होता है, जैसे जैकेटेड हो गया सबसे ज्यादा महंगा, उसके बाद ईयर पैनल हो गए, उसके बाद फर्स्ट पेज एड हो गया, उसके बाद हाफ पेज हो गया, बाद में क्वार्टर पेज हो गया, और उसके बाद कॉलम साइज हो गए, और लास्ट पेज एड हो गए। फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि वर्गीकृत विज्ञापन में पैसे जो तय होते हैं, उसकी कॉस्ट जो तय होती है शब्दों के हिसाब से होती है, तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, इतना ज्यादा एक्सपेंस रिकवर नहीं हो पाता इन मीडिया वालों का। तो उन्होंने क्या किया, डिस्प्ले एड का भी सहारा लिया। अब बात आती है कि और भी कौन कौन से प्रकार है। तो दोस्तों, एरिया के हिसाब से, आपके यूजिंग बाय मीडिया के हिसाब से, और इफेक्ट के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से, और रिपीट के हिसाब से, वीकली, मंथली, डेली, ये एड्स भी है दोस्तों। इसके अलावा हम जो जानेंगे कि ब्रांडिंग क्या चीज है। फ्रेंड्स, हम रोजाना एक नाम लेते हैं कि मेरा ब्रांड है, मार्केट में मेरा ब्रांडिंग है, मेरा ब्रांड चलता है, मेरा नाम चलता है। ये ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग वह चीज है दोस्तों जो कि आपको मार्केट में आपको इज्जत के साथ बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है दोस्तों। और कई बार हम क्या है, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग को एक ही मान बैठते हैं, लेकिन दोस्तों एडवर्टाइजिंग है ना, वो ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी है। बिना एडवर्टाइजिंग के ब्रांडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज मेन टूल ऑफ ब्रांडिंग। मेन टूल है इसका, मेन वह स्रोत है, वह साधन है जिसके द्वारा ब्रांडिंग की जाती है दोस्तों। ब्रांडिंग क्यों की जाती है? पहला तो है कि नए जो कस्टमर है उन तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, और यदि हम पहले से मार्केट में हैं, राइट, तो हमें हमारा अस्तित्व उन कंपटीटर्स के साथ बनाए रखने के लिए। और यदि हमारा ब्रांड पुराना है तो उसे वापस नए रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये ब्रांडिंग की मेन जरूरतें हैं दोस्तों। और ब्रांडिंग के मेन स्ट्रेटेजी या स्टेप्स कौन सा? पहले तो हमें पर्पस पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है हमारा ब्रांड का। क्या हमें ओल्ड जो है प्रोडक्ट उसके लिए ब्रांडिंग करनी है, या हम नया ब्रांड मार्केट में ला रहे हैं, या प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में। दूसरा, हमारा कंज्यूमर कौन है, टारगेट ग्रुप कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है। फ्रेंड्स, इन दो चीजों का यदि हमें ध्यान होगा ना, तो हम ब्रांडिंग बहुत ढंग से कर पाएंगे, सही तरीके से ब्रांडिंग हो पाएगी। तो दोस्तों, ये चीजें क्या होती है, यदि हमारे पास ब्रांडिंग या रिसर्च, मार्केट रिसर्च नहीं होगा बिफोर ब्रांडिंग, तो हमारा जो पर्पस है वो शो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि हमारी ब्रांडिंग सही नहीं हुई तो हमारा जो टारगेट ग्रुप जो था यूथ था, तो हम किसके लिए कर बैठेंगे ब्रांडिंग? हम पूरे सबके लिए ब्रांडिंग कर बैठेंगे। यदि हमारा टारगेट ग्रुप है स्टूडेंट, यदि हमारी मार्केट रिसर्च नहीं हुई ब्रांडिंग के लिए, तो हम क्या कर देंगे, हम बुजुर्ग लोगों के लिए हमारे ब्रांड है वो पेश कर चुके होंगे। तो दोस्तों, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और सारा कुछ जो पैसा है, समय सारा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेन स्टेप्स हैं। अब हम जानेंगे कि एड्स में एथिक्स क्या चीज है। दोस्तों, एथिक्स तो हर जगह लागू होती है। एथिक्स आपकी मोरल वैल्यूज जिसको बोलते हैं, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन वैल्यूज, ये सारी एडवर्टाइजिंग के एक पार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, एथिक्स वो है जो कि किसी व्यक्ति को या किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को क्या करते हैं, या एडवर्टाइजर को क्या करते हैं, उसे सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यदि वो राह से भटक रहा है तो उसे राह में लाने का काम करते हैं। पहली चीज क्या है, हमें ट्रूथफुलनेस, हमें सच्चाई के साथ ब्रांड को पेश करना है। झूठ होता है दोस्तों, मैं मानता हूं कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर झूठ है, लेकिन झूठ इतना नहीं। आटे में नमक चल सकता है, लेकिन नमक में आटा नहीं चल सकता। ये एडवर्टाइजर को ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, मैं बताऊं दोस्तों, एडवर्टाइजिंग हम मानते हैं, सभी मानते हैं कि एडवर्टाइजिंग के बिना प्रोडक्ट का उत्पादन करना एक बंद कमरे में किसी को थप्पड़ मारने के बराबर है। जिसने खाया उसको तो पता है, उसको चांटा लगा है, लेकिन किसने मारा उसे पता नहीं है। तो दोस्तों, ये एक मेन चीज है जो कि एडवर्टाइजिंग की वजह से संभव हो पाती है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हमें हमारे मित्र देशों की आलोचना नहीं करनी है। हाँ, हम न्यूज में कर सकते हैं, लेकिन उस एड के अंदर कंपटीटर के नाम उस ढंग से नहीं दे सकते। दूसरा, हम जो भी एथिकल चीजें हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते। एथिकल चीजें जैसे कि हमारा जो फ्लैग है, तिरंगा है, उसका हम यूज नहीं कर सकते, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका हम यूज नहीं कर सकते। नेहरू जी का, चाचा नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, क्योंकि हमारे रेस्पेक्टिव पर्सन है, राइट। इनका हम बिना किसी वजह से हम काम में नहीं ले सकते नाम। इसके अलावा कई बार होता है फ्रेंड्स कि हम क्या होते हैं, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं, किसी के धर्म को, रिलीजियस जो हमारी भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचती है। जैसे हमने गणेश जी को जूते के डब्बे पे छाप दिया, राइट।
जबकि गणेश जी को दोस्तों एक नई चीज बता रहा हूं, इंडोनेशिया की, थाईलैंड की जो भी वहां की मुद्रा है ना दोस्तों, वहां की करेंसी के ऊपर गणेश जी को छापा जाता है। अब देखिए कितना रेस्पेक्ट है। और यहाँ पे क्या होता है इंडिया के अंदर, रिलीजियस विद्वेष की वजह से क्या होता है, उनको ऐसी जगह छाप दिया जाता है और उनका प्रिंट कर दिया जाता है कि बहुत विद्वेष फैल जाता है दोस्तों। और भी बहुत सी चीजें हैं, ब्रांड का नाम सही देना चाहिए, महिला को प्रोडक्ट के रूप में नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन यदि दोस्तों एडवर्टाइजर ऐसी गलती करता है तो इसकी लायबिलिटी किस पे जाती है, वह उन संस्थाओं पे जाती है, उन बॉडीज पे जाती है जो उनको कंट्रोल करती है। तो उनको चाहिए कि उन पर नकेल कसे और उन्हें ऐसा करने से रोके। यदि नहीं रोक पाए तो अपना इस्तीफा दे ताकि उसको रोक पाए। एक चीज और है दोस्तों, हर आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है या व्यक्तिगत लाइफ होती है, उसके साथ खिलवाड़ करने का एडवर्टाइजमेंट को कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। किसी भी तरह का उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है प्रोडक्ट को और एडवर्टाइजर को। और फ्रेंड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैगी का। मैगी को फ्रेंड 6 महीने के लिए पाबंद किया गया, तो उसे मार्केट से निकलना पड़ा, फिर अपने आप को नए रूप में ढाल कर। और एक दोस्तों ऐसे कोई एड नहीं करना है जो कि हमारे अंदर हीन भावना का विकास करते हैं। हीन भावना आप जानते क्या होता है, कि हमारा प्रोडक्ट खाने वाला बच्चा सबसे तेजी से बढ़ेगा, यदि हमारा प्रोडक्ट पहनेगा तो उसकी अलग पहचान बनेगी। तो दोस्तों ये चीजें हीन भावना का विकास करती है और घर के अंदर कलह का वातावरण बनाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कुछ ऐसे टॉपिक जो कि अनटच्ड थे, और आपने शायद जो है किसी भी चैनल पर, YouTube चैनल पे या ऑनलाइन क्लास में कभी भी नहीं सुने होंगे इतनी शिद्दत के साथ और इतनी क्लियर वॉइस एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपने कभी भी नहीं जाना होगा इन टॉपिक्स को। तो दोस्तों देखते रहिएगा, पुनः हमारा इस चैनल को लगातार देखिएगा, आपको नई चीज हर बार कोई न कोई नई चीज देखने को मिलेगी। दोस्तों जो हमारा उत्साह है ना, वो आपकी कमेंट्स हैं, वो आपका एक बेल आइकन और एक सब्सक्राइब है जो कि हमें उत्साह देते हैं कि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाकर लाएं, अच्छे अच्छे सरल भाषा में एंड ग्रास्पिंग जो पावर होती है उसके अंदर लेके। तो दोस्तों देखते रहिएगा हमारा परम क्लासेस चैनल। हम कल इसी समय इसी चैनल पर मिलते हैं। थैंक यू।